Assalamualaikum everyone. Welcome back to another episode of Climate Action Pakistan webinar series. आज हमारे साथ हैं आबिद मेमन और आबिद मेमन का बहुत ही इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड है और वो इस वक्त है एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी थाईलैंड में and he is pursuing his further educations in AIT in food engineering and bioprocess technology. Lekin before that, he had a bachelor's in mechanical engineering from Mehran University. And his journey from Mehran to AIT has been interesting and pathfinding for himself. तो आज हम बात करेंगे आबिद से कि किस तरीके से उन्होंने like even way before mechanical engineering choose की and like what he's doing now. Welcome Abid. Please introduce yourself to audience. Yes, I'm Abid. I belong from Hyderabad originally, but currently living in, I was living in Karachi before coming to AIT, of course. Now the thing is, AIT में आने का और इस एक यूनिक किस्म की फील्ड में आने का, it was something that I planned, of course, because I have a mechanical background, but at the same time, मैंने एज अ शेफ काम भी किया है और उसके अलावा आई हैव सम एक्सपीरियंस एट दैट सेम टाइम आई हैव अ डिग्री इन culinary arts as well. So उस बेसिस को लेते हुए आई गेन सम एक्सपीरियंस इन कराची, बट देन अगेन विद द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड दैट आई हैड, मेरा इंजीनियरिंग का भी एक्सपीरियंस रहा है एज अ सस्टेनेबिलिटी इंजीनियर. सो दोनों को मिलाकर आई वाज प्लानिंग टू डू समथिंग like that can complement both the fields. So I was like exploring Europe, even North America. There were multiple opportunities, but at the same time, sometimes what happens is you can't find the. Sometimes there are visa issues. Sometimes there are scholarship issues. Affordability is a problem for everyone, of course, right? सो एआईटी में आने का यही मेरा मकसद था. एंड व्हाई आई केम टू एआईटी इज बिकॉज दे वर ऑफरिंग स्कॉलरशिप. मेरा एक्सपीरियंस और मेरे जो उसके साथ साथ जो मेरी डिग्रीज वगैरह और मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, मैंने एक प्रोफाइल बनाई जिससे एट द एंड ऑफ द डे दे ऑफर्ड मी स्कॉलरशिप इन दिस रिस्पेक्टिव फील्ड, फूड इंजीनियरिंग एंड बायोप्रोसेस. Then it was initially they offered me 50% scholarship, but I kind of negotiated with them, and at the end of the day, they offered me 75%. AIT में 100% scholarship भी मौजूद है if I have better profile, और मैं जनवरी इनटेक में आया था. That was something I didn't know कि जनवरी और अगस्त इनटेक में आने के भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं. एडवांटेजेस जनवरी इनटेक में आने के ये हैं कि you have more time to explore AIT, like 24 months. In the August semester, you have just 22 months. So when it comes to thesis, आप thesis करना चाह रहे हैं, आप exchange program करना चाह रहे हैं, internship करना चाह रहे हैं, but specifically thesis में आपको फायदा होता है जब आप जनवरी intake में आते हैं. But when it comes to scholarship, मैं आजकल हर किसी को कोई मुझसे AIT के बारे में पूछ रहा होता है कि मुझसे यही कह रहा होता हूँ कि if you are coming to AIT, come in August semester because a lot of scholarships. And there are ADB scholarships, Quinn and King scholarship जो यहाँ की government offer करती है. And then there is AIT scholarship. AIT doesn't offer you 100% scholarship. जो AIT scholarship के नाम से हम AIT की website जब खोलते हैं वहाँ पर there are many other scholarships as well. But AIT doesn't offer you 100%. So that was something I didn't know. But after coming here, मैं किसी और को ये advise करूँगा कि if they are coming to AIT, they should come in August semester. So far, my journey here in AIT has been really good, and I have learned a lot of things. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं माइक्रोबायोलॉजी यहाँ पर आकर पढ़ूंगा. आई एम इंजीनियरिंग. आई हैव इंजीनियरिंग बैकग्राउंड थ्रू एंड थ्रू आउट व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन. हाँ, culinary आर्ट्स में कुछ सब्जेक्ट्स थे जो बायोलॉजी और न्यूट्रिशन या हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड थे, जिसमें बायोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी का पर्सपेक्टिव आ जाता है या न्यूट्रिशन का पर्सपेक्टिव आ जाता है. बट देन अगेन दिस इज अ न्यू थिंग फॉर मी.
अगर देखा जाए तो एआईटी, सबसे अच्छी बात एआईटी की ये है कि इफ समवन वांट्स टू स्विच और वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, फॉर एग्जांपल, instead of focusing on engineering purely, for me, in my case, for example, or if you are a medical student, you want to like pursue engineering, this is the best place for you guys, because they don't judge you whether you have a different background entirely when it comes to your job experience as well. They give you scholarship and everything based on your overall background and overall profile. उनको आप कन्विंस कर सकते हैं, उन बेसिकली आप वहाँ पर अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी हाइलाइट कर रहे होते हैं ना एप्लीकेशन में, सो उसमें आप उनको कन्विंस कर सकते हैं, बेसिकली लेट देम नो दैट दिस इज व्हाट यू आर प्लानिंग टू डू। हर चीज प्लानिंग के बगैर आप अप्लाई करेंगे तो ऑफ कोर्स इट्स नॉट गोना वर्क आउट। इवन इफ यू गेट एन एडमिशन इन एआईटी, यू आर जस्ट गोना डू द डिग्री, अगर आप प्लान नहीं कर रहे हैं आगे का, तो ऑफ कोर्स द डिग्री वोंट मैटर। सो मैं भी प्लान कर कर आया हूँ, बिकॉज I have like around 4 years of job experience overall. Restaurants के अलावा, hotels के अलावा, I have worked in different, like as an environmental engineer, right? So हर चीज को देखते हुए, I think this is a good place. अब थाईलैंड पे आ जाते हैं कि थाईलैंड काफी लोगों को ये लगता है कि इट्स अ वैकेशन स्पॉट, बट when I came here, it's a really good place, a pleasant environment, full of diversity, a lot of, like, if you like greenery, this is the right place for you, especially AIT, क्योंकि AIT में यहाँ पर कंजर्वेशन पे बहुत ज्यादा काम हो रहा होता है, and you will find a lot of animals. It's what do you call a peaceful place. Like when I am like studying, and besides studying, if I don't want to do anything, I am like somewhat I want to do something different, I just go out of my dorm and like I have my bicycle with me all the time. I like to travel by myself and with your friends as well, because friends हर time पे available कभी कभार नहीं होते, right? So what you do is you can stroll around by yourself, and it's a really peaceful environment. You will, everyone will like it. It's something that, for me personally, it's a really good thing for me always. So that was something, I guess, आप अगर वेबसाइट के थ्रू सारे प्रोग्राम्स को चेक करेंगे डिटेल में, सब्जेक्ट्स व्हाट डू यू लाइक, एंड द गुड थिंग अबाउट एआईटी is that you can also explore subjects from other departments as well. Like हमारे पास 3 schools हैं यहाँ पर: SERT CERT, which is related to mostly MSc degree, and sciences जिसमें फूड इंजीनियरिंग का पर्सपेक्टिव आ जाता है, क्लाइमेट चेंज का पर्सपेक्टिव आ जाता है, सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन का पर्सपेक्टिव आ जाता है। बट देन वी हैव सेट एज वेल, विच इज प्योरली रिलेटेड टू इंजीनियरिंग। अगर आप इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हैं, जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, राइट, सो उसमें से मैकाट्रॉनिक्स की भी आप डायरेक्शन में जा सकते हैं। सो मैकाट्रॉनिक्स इज वन ऑफ द रियली प्रोमिनेंट थिंग गोइंग ऑन हियर इन एआईटी। और उसके अलावा देन देयर इज सोम, सो इट्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, लाइक इट्स लाइक रैंकिंग के हवाले से अगर बात की जाए तो सोम इज अ रियली गुड प्लेस फॉर एवरीवन इफ दे वांट टू कम हियर। एआईटी की अब मैं ये बात करूंगा कि एआईटी आप यूनिवर्सिटी की तरह उसे रैंक करेंगे तो इट्स नॉट समथिंग like that you can rank, or it's even not in the ranking system. But when it comes to their individual departments and STGs, उसमें इनकी रैंकिंग बहुत अच्छी है। इट्स बेसिकली नॉट अ यूनिवर्सिटी, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन that provides you with these master and PhD programs. और of course उनकी रीच भी बहुत अच्छी है। यहाँ पर आए दिन UN, वर्ल्ड बैंक एंड डिफरेंट डिफरेंट जो एनजीओ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, दे विच आर वर्किंग ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड कंजर्वेशन, वो यहाँ पर आते रहते हैं। एंड लाइक व्हेन इट कम्स टू नेटवर्किंग, दिस प्लेस इज अ रियली गुड प्लेस। आप अपनी रीच अच्छी रखें और ये कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करें। So finding a job and connecting with people, this is a really good place when it comes to that. So that has been my experience so far. Like I have been here for around 8 months, and like
Yeah, there is one disadvantage. Yeah, of course, हर चीज अच्छी नहीं होती हर जगह की. You can't apply it to a job. Like you can't, like when you have a student permit, like ED visa मेरे पास है, education visa, right? पहले आपको 3 months का मिलता है, then you renew it to ED plus 1 year visa, right? उसमें you can't work in Thailand. It's illegal. So people here tend to work, but at the same time, it's not. I won't advise people to work it because if you're caught, you can get into trouble. But there is a silver lining to everything. In within the campus, you can find a lot of opportunities like internship opportunities. ये ship मिल जाती है. इसके अलावा, if you are good enough, you can get like a job here in AIT within the institution. उसमें वो आपको फिर जो मैनेजमेंट होती है ना वो आपको सपोर्ट भी करती है. उसमें फिर वो आपको बॉदर नहीं करते. But then again, the best way to explore jobs here in Thailand is finish your degree, get done with it. Like एक सेमेस्टर आपके डिग्री में है, आप रिसर्च कर रहे हैं, आप थीसिस कर रहे हैं. देयर आर डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स. आप ज्यादा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को एक्सप्लोर करेंगे, आपको ज्यादा पता चलेगा. मेरे बताने से आपको चीजें वो आप भूल जाएंगे. So there are research is separate thing, thesis is separate thing. Thesis 1 year की होती है, research 6 months की होती है. रिसर्च के साथ आप इंटर्नशिप कर सकते हैं या एक्सचेंज प्रोग्राम कर सकते हैं. सो आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई कर सकते हैं. So इट्स अ रियली गुड थिंग व्हेन इट कम्स टू दैट. बट आप यहाँ पर आए एंड आई गेस लाइक एक्सप्लोर करें वेबसाइट को, और आई थिंक यू कैन गेट व्हाट यू थिंक यू नीड एंड जो आपके फ्यूचर प्लान से अलाइन कर सकता है. सो दैट्स माय स्टोरी सो फार. आई थिंक Yeah. I have so many questions. लेकिन उससे पहले मैं ये कहूँगी कि um, आपने कुछ ऐसी-ऐसी पॉइंट्स टच की ड्यूरिंग योर इंट्रोडक्शन इवन जो कि मैंने कभी पहले ना तो खुद डिस्कस की है, ना तो किसी को करते हुए सुनी है, व्हिच आर रियली रियली रियलिस्टिक एंड आई एम सो थैंकफुल कि आपने वो बातें की, स्पेशली ये जो जनवरी अगस्त वाली बात आपने की ना क्योंकि ये सारी चीज़ें वही हैं ऑफ कोर्स जो आपको ऑन ग्राउंड पहुँचने के बाद पता चलते हैं लाइक बाहर किसी को नहीं पता लाइक फॉर यू इफ यू आर सिटिंग आउटसाइड यू नो डोंट नो कि जनवरी दिसंबर में क्या फ़र्क है विद रिस्पेक्ट टू स्कॉलरशिप एंड एज़ वेल एज़ वेल 22 मंथ्स 24 मंथ्स तो मैंने अभी तक नहीं सोचा था लाइक आपके बात करने के बाद मैं सोच रही हूँ कि ओके दिस इज़ वेरी वैलिड। um and then of course I could resonate to everything that you were saying from my experience as well. For my audience who don't know, I have also been studied in AIT, and the most fascinating fact, again, resonating with what you said, मैं भी AIT अपना path change करने के लिए गई थी. I had a background in electrical engineering. I'm sorry I'm taking your time, but this is very relevant and important. And मैं navigate कर रही थी to find something related to environment and climate change. And I just didn't want to do something in pure electrical engineering. Um, and then I just found a very perfect program for me at the very perfect, well, during global pandemic. So at a very good time. Um, and then it helped me further, curate my journey. जैसे आपने बात की कि मैं यहाँ बैठा हूँ doesn't mean कि मैं आ गया and that's it. I was planning for it, and then I was doing the same. And then I can vouch for it that जो AIT में आप बैठे हैं because it's globally recognized organization or institute or university आप जो भी इसको कह लें. So मैं जब आयरलैंड के इंटरव्यूज दे रही थी यूके के इंटर they knew there was a place called AIT and it was highly recognized and they were like okay if you're there like उन्होंने भी कुछ सोच के तुम्हें लिया होगा ना it was a very very positive point. Um thank you for the wonderful introduction. We have opened up a lot of conversation. Lekin, let's come back to your background in culinary arts. Maybe some of the audience doesn't exactly know from the word culinary. So, how did you start? I mean, how like after mechanical engineering? Because, for example, like I'm an electrical engineer who, thinking back when I graduated, अगर even मुझे like I said मुझे climate I had to change my field मुझे लेकिन मुझे अपनी field change करने के लिए I had to go through a pandemic to यानी कि दुनिया की सारी चीजें भुला के
बैठ के मतलब लाइक यू लॉस्ट योर जॉब, लॉस्ट लाइक यू कैन डू एनीथिंग इन पेंडेमिक। और जब मुझे दुनिया भर का टाइम मिला एंड देन आई थॉट ओह रियली आई नीड टू नो व्हाट आई वांट टू डू, मुझे नहीं पता है लाइक। एंड इट टुक अ व्हाइल थैंक्स टू पेंडेमिक। आपने इतने इजीली आई मीन आई डोंट नो मे बी फॉर it was the same timeline, but not easily. So I should not maybe underestimate your journey. How did you find out what you want to do? What is culinary arts? Q, and then how was the scope like in Pakistan? And where did you study it? And what did you study? आपने कहा कि आपके पास एक degree है. Um, so all the क्या, क्यों, कब, कैसे of your culinary arts experience. Let's start this from the start. मैं basically cooking has been my passion since I was pretty young, like around 10 years old. I have been like contributing when it comes to like my home chores, like cooking in my household, like helping out my mother a lot. Yeah, so my sister was not something like हमारे जो typical society में, because the girls or the women are someone who cooked inside the house, right? But that wasn't the case in my household. I was quite interested actually to help my mother out always. Then I started cooking. It's एक शौक की तरह basically मैंने चीज शुरू की थी. Then I started getting good at it. When I was like in my, I did my basically secondary and higher secondary education from Aga Khan board. Everything was going good. मैं biology में था, ninth metric में. So I was really good at that, like when it comes to sciences and everything. But because of some confusion, I switched to engineering. It's something that I didn't want it to do, but I was good at it. Something like that. So usme maine instinctively I came to engineering. At the same time, I was doing cooking and everything. When I passed my like I graduated from my inter like in Aga Khan board. I wanted to like go abroad and like pursue culinary arts जो cooking की degree है. So hotel management basically बड़ा इसका domain है. होटल मैनेजमेंट में दो फील्ड्स आती है हमारी, culinary arts कुकिंग की फील्ड, दूसरी हॉस्पिटैलिटी आती है. सो इट्स समथिंग लाइक आई ऑल्सो वांटेड टू बी लाइक, मैं हमेशा से एक मूवी है, इट रियली गिव मी एन इंस्पिरेशन. इट्स कॉल्ड Ratatouille, like a French mouse movie, like mouse that is like kind of cooking and everything. Your French cuisine एक uh, को basically उसकी टेक्निक यूज करते हुए basically he is cooking and everything. It was an inspiration because मुझे कुकिंग की फील्ड culinary arts बहुत एक एलिगेंट फील्ड और एक बहुत एलिगेंट बेसिकली मुझे वे ऑफ लिविंग लग रहा था. बिकॉज यहाँ पर हमारे यहाँ एक शेफ को, एक हम सिंधी में कहते हैं, हम बावर्ची या बोरची कहते हैं. सो इट्स अ टिपिकल थिंग टू से बेसिकली. फॉर मी शेफ, फॉर द फर्स्ट लाइक आई हैड दिस आइडिया ऑफ डूइंग दिस. पहले ही इंस्टेंट में मैंने ये सोचा कि इट्स एलिगेंट एंड रियली गुड फील्ड, आई वांट टू डू इट. बट हर चीज एक तस्वीरी कहानी नहीं होती. रियलिटी इज क्वाइट डिफरेंट. I I had like an like what do you call it, a discussion with my father and my family, because they were the one who were guiding me over what I need to do, what was the right choice, right? So मैंने मैकेनिकल ज्वाइन ऐसे की कि इस शर्त पे कि when I graduate, as soon as I graduate, I will join culinary arts. I already knew which institute to go to. मैंने रिसर्च पहले से ही कर दी थी. एंड मेरा ये था कि मेरे अब अपने बा के साथ ये एक पैक्ट हमने बेसिकली किया था कि आई विल डू द डिग्री, एंड आफ्टर दैट ये मेरा बैकअप होगा. इफ आई फेल इन culinary arts somewhere along the way, I will continue this thing. This will be a backup. But what I want to do is follow my passion, which is cooking field, right? So जैसे मैं ग्रेजुएट हुआ, कैसे करके, एंड आई गॉट रियली गुड ग्रेड सरप्राइजिंगली, बिकॉज वहां पर कभी कभार ये होता है कि इफ यू आर गुड एट समथिंग इट डजंट मीन दैट्स समथिंग यू वांट टू डू, राइट? अगर मेरी मैथ्स अच्छी है, मेरी फिजिक्स अच्छी है, आई डोंट सी माई सेल्फ एज एन इंजीनियर.
फॉर एग्जाम्पल। मैं कभी भी विजन आगे की सोचता था तो मुझे कुछ नजर नहीं आता था। आई इट वॉज अ लॉस्ट कॉज फॉर मी। सो इवेंचुअली आई ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूट इन कराची। जो जैसे मैं जनवरी में मुझे डिग्री मिली एंड आई जस्ट एनरोल टू दिस इन विद इन जनवरी, और मैंने विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आई ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूट इन कराची जो गुलशन में था। अभी वो शिफ्ट हो गया है, रिसेंटली मुझे अभी पता चला है। सो एनीवेज, इट वाज समथिंग जो टाइम बीइंग के लिए मेरे लिए सबसे अच्छी चीज थी, मुझे जो लग रहा था। So I finished that degree. During that time, I also gained some experience in like restaurants. Like मैंने competition, international competitions भी basically cooking के मैंने उसमें भी part लिया. I secured silver and bronze medal. I couldn't secure a gold because I think I would have done that if I would have like better planned things. Because मैं अकेला था, I didn't have the help and the guidance needed. It was something I was doing by myself. कभी कभार आपको कोई गाइड करने वाला होता है, बिकॉज इंजीनियरिंग और मेडिकल की फील्ड इतनी कॉमन है कि कोई ना कोई आपको गाइड करने वाला अलोंग द वे मिल जाता है, राइट? दिस वाज समथिंग टोटली न्यू फॉर माय फैमिली एंड एवरीवन दैट वर इन माय सराउंडिंग, राइट? सो आराम आराम से आई कुडंट नेटवर्क प्रॉपर्ली. दैट वाज वन ऑफ द रीजन आई was somewhat stuck. I couldn't get better jobs क्योंकि नेटवर्किंग culinary arts like any other field बहुत ज़्यादा important है. If you don't know the right people, if you are not aligned with the right people, you can't get ahead. So eventually, I decided because this thing after even after doing my degree, मैंने काफी जगहों पर अप्लाई किया. I applied to Canada. I got by the way culinary school में मेरी एडमिशन हो गई थी ओंटारियो में. I applied. I my visa was rejected. Like हमेशा हर चीज परफेक्ट नहीं होती है, फेल्यूर्स हर जगह होते हैं. आई ऑल्सो गॉट एन एडमिशन इन इटली, वन ऑफ द promising culinary arts institute, यूनिवर्सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमिक साइंसेज पलांजो में चार. आई वाज नॉमिनेटेड लाइक फॉर ए स्कॉलरशिप. टॉप 4 में मैं सेलेक्ट हुआ था बट आई गॉट रिजेक्टेड. हार्ट ब्रेक्स हर जगह आते हैं. सो एनीवेज, इट हैज बिन पेनफुल अप एंड डाउन जर्नी रही है बहुत. It was something I wanted to follow, my passion and everything. फिर eventually I couldn't find anything. जर्मनी मैंने अप्लाई किया. देन आई मजबूरन मुझे फिर से इंजीनियरिंग की फील्ड में वापस आना पड़ा. बट दिस टाइम मैं खैर चाह रहा था कि मैं एज एनवायरमेंटल इंजीनियर काम कर सकता हूँ बिकॉज इट्स समथिंग दैट आई काइंड ऑफ लाइक. सो आई एनरोल्ड टू एनईडी यूनिवर्सिटी इन कराची. मैंने एक सेमेस्टर वहां पर दिया एंड आई गॉट ग्रेड्स एंड एवरीथिंग. एंड इन दैट very time I applied in the AIT because I found this like person called Lalaro. I don't know how, from somewhere, like Dr. Tanveer from Mehran University. Then he gave me some like reference of some other doctor from Mehran University. Then I end up contacting you and I got this like something like an opportunity, for example. And I talked to you and you guided me for that time being. And I thought to myself that there is still time. Like, I shouldn't quit. This is something that's not purely relevant to my field. Culinary arts, एक बात मैं ये highlight करना चाहूँगा. Culinary arts and food engineering and bioprocess are different things, by the way. Food engineering में आप food पे काम कर रहे होते हैं and everything related to nutrition and everything. But it's mostly aligned with product development. जो भी आप खाने पीने की चीजें, जैसे शान हमारे पास मसाले हैं, इट्स बेसिकली उसमें जो जॉब्स आती हैं वो फूड इंजीनियरिंग की आती हैं. सो इट्स समथिंग, इट्स टोटली डिफरेंट थिंग. इट्स अलाइंड विद culinary आर्ट्स. यू कैन गेट लाइक आप होटल इंडस्ट्री में एज अ गैस्ट्रोनॉमिस्ट, आप एज अ साइंटिस्ट काम कर सकते हैं. बट इट्स अ लॉन्ग शॉट. ये इस फील्ड में मेरा आने का ये भी मकसद था बिकॉज इट्स अ वेरी बिग फील्ड. फूड इंजीनियरिंग में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है. इट्स culinary आर्ट्स में तो मैं लिमिटेड था ना कि मैं रेस्टोरेंट में ही काम कर सकता हूँ. इसमें मैं even I can work as a, in food policy. I can work in like as a nutritionist, as a product developer, like as health and safety food का जो parameter आता है उसमें भी.
So it's a big field. So that's why मैं यही सोच रहा था कि if I am not taking a risk or something like that, I think this is something that I can do. और ये डिग्री जो मुझे मिल रही है, ये मुझे एमई की डिग्री मिल रही है, मास्टर्स इन इंजीनियरिंग। अब मास्टर्स इन इंजीनियरिंग का भी ये फायदा है, आई प्लान्ड एवरीथिंग, क्योंकि आप जब बाहर अप्लाई कर रहे होते हैं या कहीं और भी अप्लाई कर रहे होते हैं, तो आपको इंजीनियरिंग वर्क परमिट मिल रहा होता है। इफ आई वुड हैव परस्यूड एमएससी डिग्री अगेन हियर, तो वो रिस्की होता मेरे लिए। आई नीड टू लाइक मुझे मैकेनिकल अपने पैरामीटर को भी आगे लेकर जाना है और culinary को भी लेकर जाना है। दोनों को बेसिकली मर्ज करना है, जिस दैट्स व्हाई आई पिक्ड दिस फील्ड। और मेरी फिर अब प्रोफाइल ऐसे हो गई है कि अब मुझे लग रहा है मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, और अब नाउ आई एम इन द राइट ट्रैक, एंड आई थिंक व्हेन इट कम्स टू जॉब मार्केट एंड एवरीथिंग, अब मेरे गैप्स वगैरह कुछ भी ऐसे टाइप की चीज मुझे बॉदर नहीं करेगी। बट the thing is, that's not something that's the same kind of situation for everyone, because मैं इस मकाम तक पहुंचने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा है। You have to work hard, you have to research, and you have to basically align everything. मेरी एडवाइस लोगों के लिए ये होती है कि whatever you are doing in your bachelor's degree, if you are doing a master's, please bachelor's और masters आपकी अलाइन होनी चाहिए। अगर नहीं होती तो बहुत प्रॉब्लम होती है जॉब मार्केट में। बट देन अगेन, if you are switching, I think AIT can give you a really good platform to do that. And with the professors here, with the industrial basically influence here, you can go in the right direction. That's the thing for me, because 8 महीनों में मैंने ही काफी लोगों से मुलाकात कर ली है, so I am getting really good opportunities, and I'm making the most of it so far. That's Mhm. my story. Just one check and Mhm. a question. Check ye कि when you said aligned, aligned ka matlab, like of course, Mhm. one thing leading to another, not the same Mhm. thing. क्योंकि because that's the whole thing that we are discussing. Mhm. Um, and then आपने आगे उसको Mhm. further correct भी किया कि if you're switching, do it with a planning, not just shoot in the darks. Um, and my question is that कि I was listening to you. आपने कहा कि मैंने अपने अब्बा के साथ ये like it was a pact that I'm doing this and that, and I completely Yeah, yeah, understand. हम जहाँ yeah. से आते हैं, like and किसी का like he was right at his place, you were right at your place. लेकिन मुझे curiosity ये है कि how did you had this clarity at that stage in your life? Because well, coming from again where we come, हम तो जो civil electrical mechanical का जो choose करते हैं वो भी हम अपने parents के, और like we don't know what's like, we don't even 100% know the definition of civil electrical mechanical, वो किस कैसे होता है, like जो एक आम बच्चा मेहरान में सिलेक्शन के बाद कर, how did you had this much clarity? culinary arts के बारे में या कुकिंग वाली फील्ड के बारे में, राइट? Yes. सो बिकॉज आपको हमेशा एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। माय फैमिली हैज बीन देयर फॉर मी ऑलवेज। मैं मुझे ऐसे ऐसे नहीं था कि आई हैड टू लाइक स्ट्रगल अ लॉट व्हेन इट कम्स टू माय हाउस होल्ड, व्हेन इट कम्स टू कन्विंसिंग माय पेरेंट्स और समथिंग लाइक दैट। आई टोल्ड देम दिस इज समथिंग आई वांटेड टू डू। My elder sister mostly. So she's someone who supported me through and throughout, and my mother as well, my entire family. My father was being realistic when he told me that culinary arts, cooking field in Pakistan, if you go international, that's another thing. But in Pakistan, it's something that can make you struggle a lot, right? We come from a different background. We have like everyone does job and everything. Like this is something that might not define you in the future. But if you want to do it, I think it's better to do both the things. He used to say in my bachelor's years that do mechanical and this field both at the same time. Like you can, if you can merge them or do something like that. It was a thought.
Like he used to tell me to do that. पैशन भी पूरा हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, दोनों को साथ चलाओ। आई नो इट विल बी अ लॉट फॉर यू। साथ चलाओगे, you will understand when you grow up that why I am saying that. Because when now I am grown up, and I think what he was trying to say, what he was trying to convey, he was telling somewhat the And truth. yeah, and Basically, FEBT is doing exactly that. Like आप भी yeah, खुश and आपके अब्बा भी खुश. yeah. So something when I found this opportunity, when I told my father and when I told him that I'm getting a scholarship, he was happy and he was like, "You got an opportunity, something that I was telling you to do from the start. It's right there." And like the best thing about this degree is like my other classmates, they are gonna receive MSc degree in food engineering. But Mhm, because there are multiple options in portal, AIT portal, I selected ME degree. So I'm gonna get masters in engineering. It's up to you really. आप साइंसेस में जाना चाह रहे हैं, आपका ज्यादा न्यूट्रिशन की तरफ, या आपके मैन्युफैक्चरिंग या जो ड्राइंग प्रोसेसेस होते हैं, और उसमें मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा आ जाता है। mhm, तो मैंने उस चीज़ को भी सेलेक्ट किया है और मैं साथों-साथ मैं न्यूट्रिशन के सब्जेक्ट्स भी ले रहा हूँ। सो आई एम बेसिकली कंबाइनिंग बोथ दोज़ थिंग्स। सो mhm, लाइक इट्स समथिंग दैट यू कैन डू इफ यू हैव प्लान्ड समथिंग गुड इन द फ्यूचर। जॉब मार्केट को आप देखना बिल्कुल नहीं भूलना, बिकॉज़ अगर आप जॉब्स को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, जैसे लिंक्डइन प्रोफाइल हो गई आपकी, उसको आप अपडेट नहीं करते जाएँगे, साइमल्टेनियसली इंडीड की प्रोफाइल भी आती है आपकी। बेसिकली यू हैव टू कीप योरसेल्फ अप टू डेट, व्हाट आर द न्यू थिंग्स दैट आर हैपनिंग। अपनी प्रेज़ेंस मेरे ख्याल से इन हाई एंड जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उसमें आपको शो करनी पड़ती है। या यू डोंट हैव टू पोस्ट एनीथिंग बट एट लीस्ट अपडेट these mhm, profiles that you have so that you can be seen, and someone, a recruiter, can pick you up on these kind of basically platforms at any time। आपकी बेसिकली नेटवर्किंग होती रहे, बात होती रहे, इंटरव्यूज भले ना हो, एटलीस्ट सम यू आर mhm, सीन। सो राइट नाउ आई एम डूइंग द सेम थिंग, एंड आई थिंक हर चीज को देखते हुए, एक्सपीरियंसेस को मेरे देखते हुए, मेरी सीवी अभी ऐसे बनी हुई है, तो हर चीज, इवन माई culinary experience is aligning with everything. It's really hard to do, but mhm. yeah, I made sense of everything at the end of the day. So ओके। आपने हल्का सा टच किया अबाउट द फूड इंजीनियरिंग एंड बायोप्रोसेस टेक्नोलॉजी, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा सा और एक्सप्लोर, आई मीन एक्सपैंड करें इस टॉपिक को और बताएं, ना सिर्फ उन लोगों के लिए, ऑफ कोर्स, लाइक आई मीन इवन there wouldn't be many people coming from culinary arts to food process engineering. So we'll just like introduction of what is food process engineering, how is the career scope, or maybe slightly in context of Pakistan, कि वहाँ पे क्या scope है, क्योंकि from my very little understanding, mhm, I think हमारे पास तंडोजाम में we have this field जहाँ पे bachelor's होती है इस mhm, field में, but I'm not sure, I'm not the best person to talk about it, लेकिन मुझे शायद अभी भी लगता है कि um, mhm, it's not everybody's first choice. Like, mhm. that's what I think. I True. know for sure some people, जिन like very few exceptional people जिनको पता होता है exactly like you कि हाँ मुझे ये करना है, लेकिन it's not majority. So what is the field and how's the careers aspect? सो आजकल हमारे यहाँ पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो पूरी दुनिया में अभी काम हो रहा है जिस पे, वो है खाना, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट फूड, वी आर वर्किंग ऑन फूड, वी आर वर्किंग ऑन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में भी ये फील्ड बहुत मशहूर है, वहाँ से काफ़ी AITians आ रहे होते हैं हमारे पास। इवन हमारे जो प्रोफ़ेसर हैं, प्रोफ़ेसर अनिल, he did his bachelor's from there, but then he didn't like do bachelor's in science or microbiology. Professor He Anil is was from a Pakistan. he is a Nepali guy. He did his I know him, BD. but like I didn't know that He he did studied from. he did his degree in uh, veterinarian. He's a veterinarian, by the way, Okay, yeah. from the back then, right? So he did his degree
in that field. He was an animal doctor for a while. Then he switched. He has that history as well. So whenever I talk to him and I tell him about my story, he's like, no need to worry about that. I also did the same thing. Oh I my was God. was a veterinarian. Then I did my degree from AIT, Masters in Food Sciences. Then I went on to do my PhD here as well. Then he did his postdoc from New Zealand. He was there for 11 years. Then he was indulged into research. And he's now one of the leading scientists in this field. So, anything can happen. अब हम इस फील्ड के बारे में बात जितनी कर रहे हैं तो अभी हमारी सस्टेनेबल फूड डेवलपमेंट की बात आ जाए या क्लाइमेट इंड्यूस जो फूड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं वो आ जाए, एवरीथिंग फूड रिलेटेड हमारी इस फील्ड में आ जाता है। हम मसाले बना रहे हैं, हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। यहाँ पर 7-Eleven बहुत पॉपुलर है, राइट? सो 7-Eleven एवरी प्रोडक्ट वो हमारी फूड इंजीनियरिंग या FINH FEBT की फील्ड में आ जाती है। इट्स फूड साइंसेज बेसिकली, राइट? सो अगर ये कहना है कि इसमें स्कोप नहीं, आई थिंक इट हैज अ लॉट ऑफ स्कोप। मैं जब वहां पर कलिनरी आर्ट्स कर रहा था तो मैं अपने लिए जॉब रहा होता था हमेशा लिंक्डइन पे कि यार मुझे कोई एज अ शेफ जॉब मिल जाए और लिंक्डइन पे कोई एडवर्टाइजमेंट हो। तो मुझे हमेशा फूड साइंस रिलेटेड, फूड इंजीनियरिंग रिलेटेड बहुत ज्यादा जॉब्स मिलती थी, हद से ज्यादा। मुझे कभी भी एज अ शेफ कभी भी जॉब मिलती नहीं थी। सो यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी आपने की हुई है तो यू कैन ऑल्सो कम हियर डू फूड इंजीनियरिंग। हमारे यहाँ काफी लोगों का न्यूट्रिशन से बैकग्राउंड है, वो भी आकर यहाँ पर फूड इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं। हम एक आई हैव अ गाय लाइक इन माय क्लास, ही हैज अ बैकग्राउंड इन फार्मेसी, लाइक ही इज गुड विथ माइक्रोबायोलॉजी एंड थिंग्स जो फार्मेसी रिलेटेड है। बट देन अगेन ही उसने 1 साल फूड फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम किया। देन ही स्विच्ड, इज लाइक आई हैव एक्सपीरियंस, नाउ आई एम गोना कम टू फूड इंजीनियरिंग, फूड FINH, फूड इनोवेशन न्यूट्रिशन वाली फील्ड में। सो इट्स समथिंग दैट कैन अलाइन विथ यू। अ लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज थाईलैंड में तो खाने पे ही ज्यादा काम हो रहा है। यहाँ पर एग्रीकल्चर, स्मार्ट एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा, इट्स अ डेवलपिंग फील्ड अराउंड हियर अ लॉट। और पाकिस्तान में भी अभी हमारे यहाँ काफ़ी, यहाँ से इवन हमारे पास 2-3 प्रोफ़ेसर्स भी हैं, उनसे मेरी बात होती रहती है। तो वो मुझे यही कहते हैं कि यार फूड इज़ अ नेसेसिटी, जब तक फूड एक्ज़िस्ट करेगा, ज़ाहिर बात है हम फूड के बगैर रह नहीं सकते। सो एवरीवन इज़ राइट नाउ वर्किंग ऑन फूड, स्पेशली सस्टेनेबल फूड। सो आई गेस देयर आर अ लॉट ऑफ जॉब्स एंड अ लॉट ऑफ, इट्स अ बिग डोमेन, हम कहीं भी जा सकते हैं। बट इट डिपेंड्स ऑन यू, आप किस डायरेक्शन में किस तरीके से जाना चाह रहे हैं और आपका बैकग्राउंड क्या है ओवरऑल, आपके इंटरेस्ट क्या है। क्योंकि इस फील्ड में सिर्फ मैं फूड इंजीनियर नहीं बन जाऊंगा, आप फूड साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, आप रिसर्चर भी बन सकते हैं, आप पॉलिसी में जा सकते हैं, आप हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। आई गेस स्कोप के हवाले से, जॉब मार्केट के हवाले से, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू। Um, are you doing anything related to specifically to culinary arts in AIT or in Thailand, or like you're Yeah, just focusing on yeah. the main thing? Right, right now I'm not doing anything. Like, so now the thing is, I can't work, Yeah. right? That's one of, I did try to work here. Then again, I got a student assistantship that was not relevant to my field. Like within my department, the student assistantship, yeah, even the जो भी vacancies available होती हैं, PA Mm-hmm. ship की, they are filled out. सो देर आर अपॉर्चुनिटी इफ यू वांट टू, लाइक जैसे हम बाहर जाते हैं, हम वी वांट टू अर्न सम मनी सो दैट वी कैन, लाइक बेसिकली हम अपने जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं उनको पूरा कर सकें, खाने पीने एवरीथिंग। सो उसके हवाले से यहाँ पर आप दूसरे डिपार्टमेंट में एज अ टीए काम कर सकते हैं, Mm-hmm. स्टूडेंट असिस्टेंट काम कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ मनी। मुझे एक मिली थी बट मैं ऐसी चीज में अपने आप को इंडल्ज करना ही नहीं चाह रहा जो मेरे लिए रेलेवेंट हो ही नहीं, राइट? Mm-hmm.
So that's why I didn't take it. Mhm. But इंटर्नशिप्स हैं, इंटर्नशिप्स आप कर सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में तो नहीं, ना ही सेकंड सेमेस्टर में। हमेशा टीचर एडवाइस कर रहे होते हैं कि आप थर्ड सेमेस्टर में इंटर्नशिप करें, Mhm. बिकॉज़ यू हैव थीसिस राइट? यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। Yeah. यू कैन मैनेज थीसिस विद इंटर्नशिप एंड इवेंचुअली अगर वो जॉब भी आपके आखिरी सेमेस्टर, कभी-कभार यहाँ पर मैंने काफ़ी लोग देखे हैं, जिनको जॉब भी मिल जाती है Mhm. आखिरी सेमेस्टर में। बट देन अगेन दे रिक्वेस्ट देयर टीचर एंड वो एम्बेसी को भी बता देते हैं, उनको भी वो चीज़ उनके भी माइंड में चल रही होती है कि भाई ये लड़का अब ग्रेजुएट होने वाला है, इसको प्रोफ़ेसर ने भी हेड्स अप दे दिया है, बैक कर रहा है। नाउ ही कैन वर्क, आफ्टर ही ग्रेजुएट ही इज़ गोना वर्क इन थाईलैंड Mhm. एंड ही इज़ गोना अप्लाई फॉर अ वर्क परमिट, राइट? Yeah. जो प्रॉपर प्रोसेस है। Mhm. बट साइमल्टेनियसली आप ईडी वीज़ा और वर्क वीज़ा साइमल्टेनियसली आप अप्लाई नहीं कर सकते। Mhm. आपका जब ईडी वीज़ा एक्सपायर होगा तो फिर आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकेंगे। सो Okay. दैट्स द थिंग। Yeah. सो फॉर नाउ स्कॉलरशिप मेरे पास इतनी है, आई कैन मैनेज इट Mhm. एंड लाइक समटाइम्स व्हाट आई डू इज़ आई कुक समथिंग इन माय डॉर्म, लाइक अ लॉट ऑफ स्टफ। एंड हमारे यहाँ ऐसे हमारे पास एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म भी है, जिसमें हम जैसे जेजे टर्मिनल JJ? उसका नाम Yeah, या यू JJ. रिमेंबर राइट? So anyways, I advertise some food that I have cooked this if anyone wants this. उसमें भी कभी-कभार मैं सेल कर लेता हूँ कुछ। It's Okay. something you if you are smart enough, you can do a lot of Mhm. things. So when it comes to earning money, you can earn money. You all you need to be is are like Yeah, you can be smart with food, you can also do a lot of other things. yeah. एक मेरा दोस्त है, what he does is he buys cycles from Bangkok because यहाँ पर हमारे एक अंकल हैं जो yeah, नाम नाम नहीं याद आ he's a रहा. troublesome person actually. So no one wants to go there. So what he does is he sells the bicycle like Mhm. with like good price, but then again better price than reasonable price than that guy. Then the And only that other option. yeah, the old Yeah, guy actually. He's not good with everyone. He's good with yeah. chosen few Selected. actually. Yeah, Yeah, selected people. yeah. Because I Just did myself did a bike from him, so I'm in conflict with him I know always. I've been there. I've been there. Just for context, for Mhm, audience, क्योंकि ये और ये जो कॉन्वर्जेशन है यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट कॉन्वर्जेशन है उसके लिए ये बहुत जरूरी है. ओके, AIT mhm, इज टेक्निकली इन Bangkok, like on paper, but it's very far from Bangkok city. It's in Pathum Thani province, which like आपको Bangkok city तक जाने में by bus 1 घंटा 45 minutes आराम से लग जाते हैं city center तक पहुंचने में. And AIT जहाँ पे है, it's like एक गेट के अंदर जो एआईटी की बहुत प्यारी गेट है, आप उसके अंदर चले गए, देयर इज अ होल वर्ल्ड इनसाइड. क्योंकि मैं पेंडेमिक में थी वहां पे, आई हैड क्लासमेट्स जिनको पूरे साल में अपार्ट फ्रॉम योर इमिग्रेशन सिग्नेचर उनको एआईटी से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी. पॉइंट ऑफ सेइंग कि एआईटी अंदर एक पूरी दुनिया है जहाँ पे आपको हर जरूरत की चीज मिल जाती है. एंड एंड देन इट्स नॉट अ प्लेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, स्पेशली जब मैं थी वहां पे ड्यू टू कोविड देयर वर वेरी वेरी फ्यू पीपल इन मे बी फ्यू हंड्रेड्स. लेकिन अभी भी वहां पे it's a very limited and very beautiful space. Yeah, so this is like relevant to जो चीजें हम बात कर रहे हैं ना, क्योंकि like why are we limited to one, एक ही बंदे से क्यों साइकिल लेनी है, क्योंकि वही ऑप्शन है हमारे पास. Yeah, so you touched a bit on your scholarship, like an application process के ये portal पे ये options थे and this much scholarship you got. Can you talk more, tell us more about like social life in AIT, and also like how is the education experience abroad, कि वहाँ पे कैसे पढ़ाई जाती है, what is the difference, yes about your tech, like about your field, but in journal as well, how is it for other people, how is it for research, social life mein, do you get halal food or not? I know that, but I want it for the audience. Do you get the Pakistani food? Do you still have that Pakistani? How are the prices? और अगर किसी को scholarship 100% नहीं मिलती है, तो like roughly in PKR, what would be mhm. their estimated monthly what they need and so on. Okay, okay. So so far.
when it comes to the overall environment, when it comes to पढ़ाई, right? So पढ़ाई यहाँ पर काइंड ऑफ, यहाँ पर असाइनमेंट्स और प्रेजेंटेशंस, यहाँ पर एक दफा वो चीज शुरू हो जाती है ना, जैसे अभी मेरा नया सेमेस्टर शुरू हो रहा है. राइट नाउ आई एम रिलैक्स्ड, बट आफ्टर 2 to 3 weeks you will find everyone in the library, in their dorms. They won't be like so far. अभी हर किसी की वेकेशन चल रही थी, everyone was like traveling and everything, but you won't be able to do those things. आपको वर्क, काम के साथ थोड़ी इंजॉयमेंट भी रखनी पड़ेगी, बट आई थिंक AIT हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स. इट हैज अ स्विमिंग पूल, इट हैज अ फुटबॉल ग्राउंड, लॉट ऑफ अदर थिंग्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, यू कैन प्ले गेम्स एंड एवरीथिंग. बट बात यह है कि आप इतने बिजी हो जाते हैं सेमेस्टर में, यू कांट लाइक डू ऑल दोज थिंग्स. मैं खुद फुटबॉल बहुत ज्यादा खेलता हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू असाइनमेंट्स एंड लाइक प्रेजेंटेशंस, रिपोर्ट्स, लॉट ऑफ वर्क एक्चुअली. और हर कोई प्रोफेसर कह रहा होता है बस आप अपने कमरे से या आप लाइब्रेरी से बाहर ही ना निकले. तो यहाँ पर बहुत ज्यादा काम होता है, वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है. इट वेरीज फ्रॉम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, प्रोग्राम टू प्रोग्राम, बट मोस्टली फॉर एवरीवन दैट्स द केस, राइट? इवन माय डिपार्टमेंट, मतलब हमारा लैब वर्क होता था. आई रिमेम्बर मेरे डेज ऐसे भी गुजरे हैं, 5 to 6 days हमारा प्रैक्टिकल चलता था नॉन स्टॉप. लाइक सोए, फिर आप सुबह को लैब में आए, यू टेक रीडिंग्स एंड यू रेस्ट देयर, बिकॉज वहां पर हमारा माइक्रो बायोलॉजी का काम होता था, तो वहां पर बैक्टीरिया डेवलप करने वाला काम होता था. और बैक्टीरिया डेवलप होने में टाइम लगता है, तो यू हैव टू ऑब्जर्वेशन करनी होती थी. 1 घंटे में, 2 घंटे में आपको चेक करना होता था कितने बैक्टीरिया डेवलप हुए हैं, नहीं हुए हैं. जस्ट आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल. यू हैव टू बी विजिलेंट, यू हैव टू बी देयर. रात को ऑल द वे आपको रात को 4 बजे भी लैब में आकर आपको रीडिंग लेनी होती थी. सो इट वाज अ लॉट ऑफ वर्क, आप थक जाते थे. इट्स समटाइम रूथलेस. लाइक आई एम एथलेटिक पर्सन, बट आई वाज सो टायर्ड आफ्टर डूइंग ऑल दिस एंटायर like routine work. So of course every university is hard, every department is hard, every subject is hard when it comes to every type of education जो भी है. But AIT में हर कोई कहता है कि it's really hard to like manage fun with this kind of thing. So I guess you you enjoy that as well, but at the same time कभी कभार आपको ये लगता है कि बहुत ज्यादा काम है. So that's something you have to be mentally prepared about, because of course this is a really good institute, or like even the professors, even the industry, they expect a lot from you. और जब आपको पुश मिलता है ऐसे टाइप का, तभी आप वो चीजें कर पाते हैं जो नॉर्मली आप नहीं कर सकते. जाहिर बात है, यू आर कमिंग हियर, यू आर डूइंग योर मास्टर्स डिग्री. इट्स लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम बैचलर्स डिग्री. ऑफ कोर्स बैचलर्स और मास्टर्स में काफी फर्क होता है. करिकुलम आपका बहुत मतलब स्पेसिफिक होता है. जैसे बैचलर में तो बहुत ज्यादा काफी पढ़ाई करनी पड़ती है, राइट? तो इसमें टेक्निकल होती है, इसमें आपकी रिसर्च वर्क ज्यादा होता है. आपको लिटरेचर रिव्यू करने होते हैं, आपको रिसर्च पेपर्स पढ़ने होते हैं. सो अ लॉट ऑफ वर्क, अ लॉट ऑफ थिंकिंग. सो ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस सो फार रहा है, इट हैज बीन गुड, बट एट द सेम टाइम मतलब आई यूज्ड टू गेट सो मच टायर्ड आफ्टर डूइंग दैट. ये एक पार्ट आ गया. आपने दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि यहाँ पर लिविंग एक्सपेंसेस, राइट? सो लाइक इफ यू आर ऑन स्कॉलरशिप, लाइक 100% आपकी ट्यूशन फी फॉर एग्जांपल वेवर्ड ऑफ कर दिया उन्होंने. उसके बाद आ जाइए एनरोलमेंट फी. एनरोलमेंट फी समटाइम्स अगर AIT या आपकी कभी कभार कुछ स्कॉलरशिप होती हैं जो आपकी एनरोलमेंट फी आपको वेवर ऑफ नहीं करती, आपको एनरोलमेंट फी पे करनी पड़ती है. दैट्स अराउंड 80,000 बात, राइट? तो वो आपको कहते हैं कि आप 4 सेमेस्टर की इंस्टॉलमेंट्स में आप उसे पे करें, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000. सो दैट्स समथिंग सेपरेट. बट ओवरऑल अगर आप लिविंग एक्सपेंसेस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात की जाए, हर चीज की बात की जाए, आई थिंक अ पर्सन नीड्स टू हैव 10,000 baht per month precisely, so that they can sustain their food, like even the rent, electricity bill, everything.
और यहाँ पर अच्छी बात ये होती है कि एवरीथिंग फ्री Can you है। just tell in PKR for या audience? सो 10,000 बाहर अभी हमारा बाहर का रेट चल रहा है अराउंड 8.8 8.7, सो लाइक अराउंड It's 10,000 ये 86, 90 या eight, yeah. 87 88,000 रुपीज पर मंथ आपको चाहिए ही चाहिए। दैट्स Hmm. द ओवरऑल एक्सपेंस। लाइक उसमें लेकिन आपका अगर रेंट भी आ जाता स्कॉलरशिप है। है तो इट्स कवर्ड। या ऑफ कोर्स आपको फिर आपको यहाँ पर किंग क्वीन में आपको लाइक क्वीन में आपको 10,000 मिलते हैं, किंग में आपको 11,000 मिलते हैं। एडीबी स्कॉलरशिप है इफ यू आर लकी इनफ, सो यू कैन गेट 15,000। यू वर Mhm. ऑन एडीबी राइट? आई रिमेम्बर। No, but equivalent to that. So ADB are very generous when it comes to giving scholarship. Like उनका stipend भी बहुत generous होता है. Mhm. So they offer you like 15,000, Yeah. 14,000. So उसमें आपका cover up हो जाता है. Like for example, I am on 75% scholarship. 25% मैं tuition भी pay कर रहा हूँ और मैं जो monthly expenses हैं वो भी kind of manage कर रहा होता हूँ, right? So 10,000 में मेरा हो जाता है. You can also save money if you are cooking in your dorm. Like Mhm. मैं अगर if you are only eating in your dorm cooking every day, you can do everything in 8,000 baht. Mm. आप 2,000 बात इजीली सेव कर सकते हैं, बट देन अगेन समटाइम्स आप जहाँ पर कैफेटेरिया है, जहाँ पर यहाँ पर इंडियन खाना मिलता है जो हलाल है, राइट? अच्छा, मैं जैसे आया था आई यूज टू ईट कैफेटेरिया फूड बट नाउ आई डोंट लाइक इट, राइट? बिकॉज दे आर बेसिकली वो क्या करते हैं कि वो फीका खाना बनाते हैं, नॉट लाइक अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट। वो हर बेसिकली यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, यहाँ पर दूसरे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं। एवरीवन लाइक्स टू ईट इंडियन फूड एवरी नाउ एंड देन, सो वो टारगेट ऑडियंस रखते हैं हर किसी को, जिसकी Mhm. वजह से उनका खाना बहुत ब्लेंड होता है। तो समटाइम्स यू कुक योरसेल्फ, यू कैन ईट इन कैफेटेरिया। दूसरा ये है कि एआईटी के साथ अगर आपको एआईटी में मजा नहीं आ रहा, खाना आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, देन यू हैव थमासाज यूनिवर्सिटी। सो Mhm. थमासाज यूनिवर्सिटी हैज लाइक इंडियन रेस्टोरेंट्स, यू कैन गो देयर, यू कैन एक्सप्लोर। मैं खुद जाता हूँ वहां पर। लाइक इफ यू हैव अ बाइक यू कैन लाइक रीच देयर इन अराउंड 15 to 20 minutes, नॉट अ लॉट। आप जब थाईलैंड में आ जाएंगे, थाईलैंड इज इवन द सिटी आई एम लिविंग इन लाइक पटुमथानी में, यहाँ से बैंकॉक जा रहा होता हूँ 1 घंटा लगता है, 45 मिनट्स लगता है। फॉर मी इट्स नॉट अ बिग डील बिकॉज आई यूज टू लिव इन कराची, राइट? कराची में हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में ही 2 घंटे लग जाता है। तो फॉर मी द ट्रेवल इन इट सेल्फ इज नॉट दैट मच। अगर आप दूसरी जगहों से आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद से, लाहौर से, या इवन वेयर एवर यू आर कमिंग फ्रॉम, राइट? द ट्रेवल इज एन इशू फॉर समवन, बट आई थिंक आप जैसे जैसे यहाँ पर आपको Mm. इवेंचुअली आदत पड़ जाती है, it's something that you won't be thinking about after some time, basically. So you can explore Thammasat University. Thammasat is a beautiful university. वहाँ पर और यहाँ पर जब थाईलैंड में ओलंपिक हुई थी, तो ओलंपिक स्टेडियम्स बने थे, तो वो थमासाट यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। इफ यू वांट टू एक्सप्लोर देम, गो फॉर अ ट्रिप, गो फॉर अ पिकनिक, यू कैन गो देयर, आर लॉट ऑफ पिकनिक स्पॉट्स एक्चुअली। सो इट्स अ रियली गुड थिंग। आप एआईटी के अलावा थमासाट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इवन पूरा पट्टम थानी, मैं जिस शहर में रहता हूँ उसका कोलंग नियोंग नाम है। इट्स अ रियली गुड प्लेस। मैं हम साइकिल बेसिकली साइकिलिंग के लिए जाते हैं, एक्सप्लोरेशन के लिए जाते हैं। हमारे साथ एक बहुत बड़ी एशिया की बड़ी मार्केट है, मैं अक्सर वहां पर जा रहा होता हूँ। यहाँ पर मीट का तो कोई मसला ही नहीं है, हलाल। आपको अगर आपको मीट चाहिए, कोई किसी टाइप का भी, आपको व्हील चाहिए, आपको मटन चाहिए, आपको चिकन चाहिए, इट्स अवेलेबल देयर। ऑल यू नीड टू डू इज आप बस पकड़ते हैं, 15 बात आपसे लेती है, यू गो देयर, देन यू कम इन 15 बात, 30 बात में आप एक काइंड ऑफ 30 बात 300 रुपीज में, या 290 280 रुपीज में आप बेसिकली आउट बैक कर रहे हैं। और उसमें आप ग्रोसरी भी लेकर आ जाते हैं। और व्हेन इट कम्स टू ग्रोसरी एंड एवरीथिंग, उनकी प्राइजेस थाईलैंड में जो अभी प्राइजेस हैं वो दे आर रिलेटेबल टू पाकिस्तान, एग्जैक्टली सेम है। कोई इतना मेजर डिफरेंस नहीं है। चिकन भी सेम, हमारे पास कितना अभी 800 900 का चल रहा है, यहाँ पर भी 800 900 में आपको 1 kg चिकन मिल जाता है बोनलेस। सो नॉट अ बिग डिफरेंस,
या लिटिल बिट बीफ में थोड़ा आपको, अगर आप बीफ खाते हैं फॉर एग्जांपल, उसमें थोड़ा डिफरेंस नजर आ सकता है। बट यहाँ पर जो मैंने सबसे एक्सपेंसिव चीज देखी है, जो हमारे हिसाब से एक्सपेंसिव है, वो फ्रूट है। यहाँ पर फ्रूट पता नहीं क्यों ज्यादा एक्सपेंसिव है, बट देन अगेन इट्स लेकिन समथिंग। talk about the quality and variety बट of the food. देन अगेन द फ्रूट हेयर इज वंडरफुल, सो मच वेराइटी, सो गुड, सो रिफ्रेशिंग। देन अगेन अब आप तला थाई की मैं बात कर रहा था, तला थाई इज अ बिग हम्म। मार्केट। अगर आप बल्क में चीजें लेकर आते हैं हाँ, तो आपको वो फ्री इतनी में बट रही सस्ती पड़ होती जाती है। है लिटरली। और मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ कि मैं तला थाई जाता हूँ फिश लेने, हम्म। फ्रेश वाटर फिश। तो कुछ ऐसी टाइमिंग, मैं कभी कभार शाम को चला जाता हूँ, मैं फ्री लेट होता हूँ। तो थाईलैंड के लोग इतने जेनरस हैं कि वो मुझे फ्री फिश भी दे देते फ्री में हमने तले हैं। थाई की दैट चीजें हैज फ्री में हैपेंड टू उठाई मी हुई है। मल्टीपल टाइम्स। Yes. आई टेल देम दैट आई वांट टू पे एंड दे आर सो जेनरस एवरी टाइम। और कभी कभार मैं कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मिर्ची लेने जा रहा हूँ, गार्लिक लेने जा रहा हूँ, तो मैं क्वांटिटी, अब जाहिर बात है एक स्टूडेंट कितना लेगा, तो मैं जब वो छोटी बहुत कम क्वांटिटी उठाता हूँ वो मुझसे पैसे नहीं लेता। तो यहाँ हम्म। पर बेसिकली तलत इज अ रियली गुड प्लेस। अगर आप तलत से ही सिर्फ शॉपिंग कर रहे हैं, यहाँ पर भी एक ग्रोसरी स्टोर अवेलेबल है, ओ हो अ, हो। जो थोड़ा एक्सपेंसिव है। बट देन हम्म। अगेन अगर आप तलत से कर रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 8,000 में आपके मंथली बता रहा हूँ, आप इसको और रिड्यूस करके 7,000 भी कर सकते हैं यस। मंथली एक्सपेंस। इट रियली डिपेंड्स ऑन यू, हाउ हम्म। यू आर लिविंग योर लाइफ हियर, यू आर कुकिंग बाय योरसेल्फ और यू आर ईटिंग फ्रॉम आउटसाइड। मैं दोनों मैनेज करता हूँ, तो मेरा खर्चा पर्सनली मेरा 8,000 आता है या 9,000 आता है। इट वेरीज, समटाइम्स हम्म। आई एम ईटिंग फ्रॉम आउटसाइड, समटाइम्स आई एम कुकिंग बिकॉज आई नो हाउ टू कुक। मैं चिकन, जो भी मैं मीट लेकर आता हूँ, फिश हो, जो भी मैं मैरिनेट करके रख देता हूँ, बल्क क्वांटिटी में मैं लेकर आता हूँ, 2 हफ्ते चल जाता है। यू हैव रियली गुड फ्रिज, लाइक आपको डॉम में हर चीज आपको मिलती है। या नाउ यू नीड टू चेक what kind of dorm you are getting. That again matters as well. Some dorms have AC, some have kitchen, some have like fridge, some doesn't have fridge. So you need to like explore that parameter of things. लेकिन बाकी अकोमोडेशन मिलना मसला नहीं है। accommodation मिलना बिल्कुल मसला नहीं है। Every time everything something is available. हम्म। अगर अवेलेबल कोई चीज आपके हिसाब से नहीं भी होती ना, तो वो आप रजिस्टर कर लेते हैं ऑनलाइन हम्म। एंड यू गेट इट आफ्टर सम टाइम। या। सो इट्स नॉट अ बिगर डील। वो आपको बहुत अच्छे तरीके से अकोमोडेट करते हैं। अकोमोडेशन डिपार्टमेंट तो बहुत अच्छा है, ओफाम भी बहुत अच्छा है यहाँ पर, जो मैनेज कर रहा होता है हर हम्म। चीज, राइट। and तो इवन they clean your rooms as well. या ट्वाइस इन अ सेमेस्टर, राइट, डीप क्लीनिंग होती है, अब and ट्वाइस होती है। we and weekly cleaning as well. वीक क्लीनिंग, इफ यू टेल देम दे विल डू इट, Okay. otherwise they don't. Now it has changed, I guess. You have to, Okay. yeah, now you have to clean things by yourself. Okay. But then again, you can call them. You can tell them if you want things clean. They, like, I guess, take 50 baht, 40 Okay. baht for that cleaning. But then again, अगर आप अपना रूम साफ भी कर रहे हैं तो हर्ज क्या है? You हाँ, can do no, that, no, of no. course. Yeah, I'm like ये जो सवाल मैं पूछ रही हूँ, it's just asking from perspective of someone living in Europe कि इस वक्त यहाँ पे accommodation के मसले इतने हैं, like I mean अगर मुझसे कोई pros and cons पूछे, I would like very strictly say कि accommodation का problem बहुत serious है। It's not, हाँ जरूर सबको मिल जाता है at the end of the day, कोई भी रोड पे नहीं होता, लेकिन बहुत स्ट्रगल है, एंड इट्स नॉट लाइक यू हैव अ चॉइस, एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव। बहुत ज्यादा पैसे देने के बाद भी आप मजबूरी में कहीं पे रह रहे होते हो, कभी कहीं दूर, कभी किसी बुरी जगह पे। लेकिन Mhm. that's why it's important कि Thailand where you have 5 6 categories, like in AIT you have 5 6 categories depending Mhm. on your budget, if you want to share or not, if you want to share the washroom or not. And then well, I thought like हमारे time पे there was free weekly cleaning. If you don't want the cleaning उनको मना करना पड़ता था, well of course चीजें change हो, लेकिन they do the deep cleaning for free. And then they do all the maintenance and repair for free, कोई भी जो चीज टूट रही है
like you have to change. You just call the OFAM and they'll do it. Um, yeah, so OFAM that's is pretty generous yeah, when it comes to that. Actually, अभी मेरा mattress भी खराब हो गया था. I told them that the very next day they changed it. yeah, yeah. So Okay, when it about yeah, Mhm. just the religious aspect of living on Mhm. campus on it. Do they have churches? Do they have mandirs? Do they have a mosque? And how is like if, do you have to go far for Juma prayer or other prayers? Or how is it like? I know, but for the audience. Yeah, so it's here on campus. There is a Muslim community. There is a PSA community as well, but then again, Muslim community, अगर आप सारी बातें praying की बात करें, तो Muslim community is really active when it comes to Mhm. that. They inform you everything on email when it comes to the timings, when it comes to any type of event that is taking place in the masjid. मैं अपनी बात करूँ तो this was my first Ramzan here in the AIT, right? So like the entire Ramzan they did iftari, Yeah, like sehri nahi thi, but they were doing iftari. Like of yeah. course it's food and everything. Like it's really good. Like they were providing you with everything. Masjid bahut every time like you can even go there, stay there. You can recite Quran. No one will mind, and like it's a really good place when it comes to that. Quite easy to find actually. This university has masters and PhD program, as I told you. That's why right now it's not a big, like it doesn't have a big diameter. Like AIT used to be really big Mm-hmm. back in the day, back in 2010. Something happened here. Actually, there was a bachelor's degree here as well, long time ago. But some a flood struck AIT, like the entire province actually. So because of that, they had to like cut off the bachelor's degree from AIT because they couldn't sustain it at that time. And that time, AIT was number one university in Asia. That's what I know. सो रैंकिंग हम बात करते हैं तो रैंकिंग में ये आ जाता है कि बैचलर स्टूडेंट्स की वजह से आपके स्टूडेंट्स और रिसर्च आर्टिकल्स ज्यादा पब्लिश हो रहे होते हैं, आपके ज्यादा प्रोजेक्ट्स हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी रैंकिंग आगे आ जाती है. बिकॉज Mm-hmm. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन AIT आर प्योरली डिपेंडेंट ऑन मास्टर्स एंड PhD स्टूडेंट जिनकी क्वांटिटी अभी राइट नाउ अराउंड 2500 है, Mm-hmm. राइट. सो बहुत कम है जनरली Mm-hmm. अदर यूनिवर्सिटीज से अगर हम कंपेयर करें तो. Yeah. Even after that, we are like in separate STGs, different departments. We are flourishing really well. अभी जो Mm-hmm. recently हमारी orientation भी हुई थी, they were like telling us, and even the website, and even I checked it online. STGs, power, no poverty, a lot of other STGs आप देखे जाएं तो AIT is flourishing in those STGs Mm-hmm. because it's working a lot on in that. So अब दूसरे पैरामीटर की बात की जाए, हाँ, अब प्रोग्राम की बात करें. अब मैं एज अ फूड इंजीनियर लाइक राइट नाउ आई एम गोइंग टू माय थीसिस in my very next semester, right? So for me, like I will be working on this sophisticated topic, which is like I'm gonna design my topic. The thesis topic that I'm gonna do is designing functional food for mental health enhancement, and it's something like हमारे यहाँ like if people are aware of mental health, I don't know. हमारे यहाँ जो भी हम खाना खाते हैं, हमारे यहाँ हार्मोन्स हमारे दिमाग में मौजूद होते हैं जो हमें रिलैक्स करते हैं, राइट. हम आई एम स्टडिंग, आई एम परफॉर्मिंग माय डेली डे टास्क एंड एवरीथिंग so that you feel better and you are able to do those things in a really, what do you call it, in a confident manner, इन अ रियली काम मैनर. तो मैं कुछ ऐसा फंक्शनल फूड या ऐसी फूड प्रोडक्ट डिजाइन करना चाह रहा हूँ जो बेसिकली आपको स्ट्रेस रिलीफ दे, और बेसिकली यू आर इन अ पोजीशन दैट यू कैन परफॉर्म ऑल योर टास्क इन अ बेटर वे, राइट. दैट्स व्हाट माय प्रोजेक्ट इज. मैंने अभी स्पेशल स्टडीज पूरी की. तो स्पेशल स्टडीज बेसिकली मैं आपको लिटरेचर रिव्यू के बारे में बात कर रहा था अभी.
सो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। आप लिटरेचर रिव्यू अपनी रिसर्च में कर रहे होते हैं, बहुत लिटरेचर को यू रीड एवरीथिंग एंड देन यू गो थ्रू इट, फिर आप उसमें रिसर्च गैप्स ढूंढते हैं। तो उस रिसर्च गैप से आपका रिसर्च टॉपिक निकलता है, राइट? सो दैट्स व्हाट आई डिड। I followed the my professor's guidance and everything, and I came up with this topic. And it's something. It's like agar aap mental health is something that has been talked about in the entire world, even in Asia. So it's something that has not been researched about much. But then again, इसको मैं जब food और खाने पीने से correlate कर रहा हूँ, it's something that's quite unique. It's not that ambitious. हमेशा याद रखिएगा, किसी एम्बिशियस चीज की तरफ अगर आप जाएंगे ना, यू आर गोना गेट स्टक। हमेशा ऐसी चीज रिसर्च में लेनी होती है और ऐसी चीज एक्सप्लोर करनी होती है दैट इज डूएबल। दिस इज समथिंग दैट इज डूएबल एंड always concerned whenever you are coming to AIT in the future. All the students, I'm basically hoping they will come here in AIT after listening to this. Always keep good communication with your advisor, your professor, because they are the one who will guide you always. यहाँ पर हमारे यहाँ काफी स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी एक्सटेंशन लग जाती है ओनली बिकॉज दे आर नॉट इन गुड कम्युनिकेशन विद देयर एडवाइजर एंड द प्रोफेसर। और वो फिर 2 साल से ज्यादा एक्सटेंशन हो जाती है। कभी कभार किसी की स्कॉलरशिप होती है तो स्कॉलरशिप भी रिवोक हो जाती है, 2 साल के बाद वो स्कॉलरशिप नहीं रहती। So I will advise everyone who is coming here to be in like better communication and always be on their toes, and please select a research topic that is relevant and that is doable। और डुएबल का मकसद ये है कि आप कर सकें, ऐसे नहीं कि ओवरऑल डुएबल हो। हर चीज ऐसी चीज करनी चाहिए जो खुद कर सके। सो दैट्स द थिंग। आई हैव अ मेंटल हेल्थ बेसिकली रिलेटेड। मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन में 6 मंथ्स काम किया है, तो आई हैव सम बैकग्राउंड, राइट? सो अगर आपका ऐसा बैकग्राउंड है कहीं किसी भी फील्ड में, आप उससे कोरिलेट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आप स्विच कर रहे हैं, मैं इंजीनियरिंग फील्ड का हूँ और मैं उसको कोरिलेट करना चाह रहा हूँ कलिनरी फील्ड से, आई कैन कम अप विद अ टॉपिक। बेसिकली फर्मेंटेशन हम कहते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, फर्मेंटेशन, भाई दही जमाते हैं ना, हम क्या कर सकते हैं, आई कैन डिजाइन सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें मैं बैक्टीरिया को इंटरेक्ट कर सकूं, या उसको मैं ऐसा टेम्परेचर और ऐसा एनवायरनमेंट दे सकूं कि that bacteria can basically sustain. So it's something I came up with a topic that's related to Mhm. like food. At the same time, it's related to mechanical field, right? So always think about that. Always go beyond. Try to get outside your comfort zone. अपने आप को पुश करना बहुत जरूरी होता है। और that's what AIT has made me do, because when I came here, I didn't know much, but because of the subjects and overall reports and everything that I'm doing so far, they made me capable enough to do these kind of things. मैंने जब आपका टॉपिक पढ़ा था, मैंने आस्क्ड फॉर इट। Hmm. ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आया था व्हाट इज दिस। मैंने सिर्फ वर्ड्स पढ़े थे। लाइक Yeah. course me coming from entire different world, लेकिन when I heard about it I really want to know more, लेकिन um, I think we'll need an entire different session for that, and we'll do it once we have done more and hopefully achieved it successfully. So I'm booking you Yeah. for that, Okay. because I think it's very interesting. um, Okay, so let's come back to life in AIT. Are like you mentioned Pakistan Student Association. Um, are you part of it? Like, and are you part of other like societies, or are there any societies जो कि आपकी field से related हो? Because I kind of remember कि हमारे जो आपने cafeterias की बात की, हमारे time पे students का एक group होता था. Like it was a student society. मुझे नाम नहीं याद आ रहा है इस वक्त. Who used SU. to no, SU, SU. yes, लेकिन जो food specific, and they used to go to the cafes and do the inspection and make a report out of it. So, Yes. are you part of something like that? And are you part of other clubs and societies? Uh, we don't have that kind of thing at the moment. I have no idea Okay. if I have that or not, because
जो अभी एक्टिव चीजें हैं ना, इट्स बेसिकली एसयू, स्टूडेंट यूनियन के थ्रू हर चीज करनी होती है। इफ यू हैव एन आइडिया, लाइक फॉर एग्जांपल दैट काइंड ऑफ आइडिया, आप सर्वे ले रहे हैं कैफेटेरिया के, Mhm. इफ द क्वालिटी इज मेंटेन और नॉट, you have to go to SU or OFAM. You have to I let think it them was know. SU. Yeah, I'm sorry, I'm mixing things. चार Yeah, साल हो गए. SU Yeah, can do that. it was SU because वो एक report publish करते थे and like they're just publishing like sending out the report to all the students with the quality of cafeteria. अब आप they're not taking any action, लेकिन it's up to you if you want to buy from a cafe shop which has expired food or which has conditions like Hmm. क्योंकि वो अचानक से inspect करते थे like nobody knows or like cafeteria की हालत I don't want to taking names लेकिन कुछ की situation कुछ shops की बुरी होती थी so like वो report Hmm. पढ़ने के बाद oh okay I don't want to eat from this place. So nowadays we have very few shops, like three Indian like restaurants there, और एक शायद एशियन है और एक दो एशियन रेस्टोरेंट्स हैं. सो दे आर रियली वर्किंग ऑन देयर हाइजीन. हम मैं तो अंदर चला जाता हूँ. अब जाहिर बात है, इफ यू गेट यूज्ड टू दैट, यू आर Yeah. getting along with people, they let you do that. So their kitchen are really clean. So अभी right now recently मैंने कोई ऐसी चीज एक्सपीरियंस नहीं की है. Mhm. साफ सुथरा खाना तो है कैफेटेरिया में, बट देन अगेन समटाइम्स टेस्ट आपको, लाइक, यू कांट गेट यूज्ड टू दैट. कभी कभार आप खा लेंगे, बट व्हेन यू आर ईटिंग इट रेगुलरली यू वोंट बी एबल टू, लाइक, समटाइम्स यू नीड अ चेंज, राइट? तो आप, जाहिर बात है, आप अपना खाना बना रहे हैं, दैट्स अ रियली गुड थिंग दैट कम्स इन हैंडी ऑलवेज. बट आई टोल्ड यू, थमसाट जा सकते हैं. आई माई सेल्फ गो टू थमसाट, बट मैं, बिकॉज आई टेंड टू, लाइक, रोम अराउंड अ लॉट. मैं काफी चीज एक्सप्लोर करता हूँ. मैं इवन आई राइड माई बाइसाइकिल टू तलत. काफी कम लोग जाते हैं, It's far. बस के थ्रू जा रहे होते हैं. Pull आई है. आई टेक माई बाइक. You have Yeah, to I cross cross the pull. the yeah. I have my backpack. Oh my god. My groceries are inside. So we are 3 to 4 friends. We tend to do that. So it's easy for us, but not for everyone, of course. Yeah, it's not So recommended. मैंने तो काफी और इंडियन रेस्टोरेंट्स एक्सप्लोर किए. इवन बैंकॉक जाना भी कोई बड़ा मसला नहीं है, because the public transport is so friendly when it comes to, it doesn't, you don't have to spend much, like 20 baht, 15 baht, Bangkok में आप पहुंच जाते हैं. I tend to go to Kazakhstan University, which is in Bangkok. There is a professor there, Pakistani professor. We are family friends. I tend to go there, like visit Kazakhstan from time to time. So, like going to Bangkok, exploring Bangkok, it's not a big of a deal. You don't need a lot of money actually. All you need is determination or travel. I don't think so. Public transport ko itna expensive hai. How You has can the manage. weather been like for you? Weather has been really good. Like for the 2 months, which was like raining like crazily. I wasn't here. I was in Pakistan, like June, July, and I came here in August, right? I came here in the mid of July. I went to Pakistan in May. तो उस दौरान यहाँ पर ट्रॉपिकल सीजन होता है 2-3 महीने, एंड इट रेन्स कंटिन्यूअसली. सो ओवरऑल वेदर, इट्स रियली गुड. जब बारिश हो रही होती है, इट्स सो प्लेजेंट. बट 1-2 महीने आते हैं, जैसे मार्च और अप्रैल, ये बहुत हम, मतलब, इवन इफ यू आर कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, आपके लिए इतनी गर्मी नहीं है. लाइक इट गोज टू अराउंड 40 डिग्री समटाइम्स, बट आई गेस यू कैन मैनेज. एंड मुझे इतनी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली है. दैट्स मी. आई आई एम रेजिस्टेंट टू हीट. आई डोंट, दैट्स मी, राइट? So, but then again, I guess overall weather is really good. It's tropical. बारिश होती है. It's so pleasant. You can go out and you can roam around. You need to have umbrella with you all the time. Yeah. That's one of the thing I need to tell everyone, because पहले सेमेस्टर में मेरे पास umbrella नहीं थी. मैंने बड़ी प्रॉब्लम फेस की थी. So having an umbrella or raincoat, whatever, go out, explore. Even यहाँ पर मैं दोपहर में बाहर कभी कभार निकल रहा होता हूँ. I don't feel
इतनी गर्मी, बिकॉज आई कम फ्रॉम हैदराबाद। हैदराबाद में 54 मैंने डिग्री भी देखा है। सो इट दैट्स अ लॉट एक्चुअली। सो यू आर फ्रॉम हैदराबाद एज वेल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो हैदराबाद इज रियली हॉट Yeah. समटाइम्स। सो कराची के कंपैरिजन में हम अगर ये काइंड ऑफ इधर प्रथम थानी का करें ना, तो इट्स बेटर। बैंकॉक ज्यादा गर्मी होती है बैंकॉक में। बैंकॉक Mhm. लाइक वहां पर तो 44 भी जा रहा होता है। कंपेयर टू एवरीथिंग, यहाँ पर ट्रीज ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, बिकॉज ऑफ द ट्रीज एंड एवरीथिंग इट्स प्लेजेंट। Mhm. सो Okay, वेदर हियर summing इज up, yeah, summing up our entire conversation with two last questions. Number one, what's next? You've been talking about planning and a clear vision since your intermediate, and like I'm sure you have a plan. If you don't want to disclose, it's completely okay. But what do you? You still have a long journey. It's just been one semester. Are you just focusing on your masters, or do you have plans? And if you have plans, what are those? other thing I would like to tell everyone, like if you are coming to Thailand, you can try to learn Thai. That will be a good step to do, like a really good thing that will come in handy for you always, because Thailand में इतनी बहुत ज्यादा jobs हैं। But the downfall though to that thing is कि आपके पास language skills Thai के होने चाहिए, because they speak Thai, and अगर आपको Thai आ रही होती है तो आपको जॉब ऐसे मिल जाएगी। मतलब they won't even think कि आपकी डिग्री, आपकी जीपीए क्या है। You need basically Thai, right? You can get any type of job. But then learning Thai is another challenge. Like for me personally, मैं क्या कर रहा हूँ? I'm learning some language because for example, I'm learning French, and I've been learning French for a while now. और A1 मेरा किया हुआ है, right? One of the levels of French मैंने पाकिस्तान में किया हुआ था. So now I'm continuing that. और उसके अलावा I'm working on my LinkedIn profile. I wanna go for internship. अभी मेरा सेकंड सेमेस्टर शुरू होगा। मैंने अभी एक सेमेस्टर दिया है, राइट? सो इट्स बेटर टू गो फॉर इंटर्नशिप्स साइमल्टेनियसली विथ योर स्टडीज, बिकॉज अगर आपको इंडस्ट्री का एक्सपोजर होगा, आप थाईलैंड में यूनिवर्सिटी भी, यूनिवर्सिटी भी थाईलैंड में आप पढ़ भी इधर रहे हैं, और अगर यहाँ का अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर आपको जॉब मिले इवेंचुअली, सो आई गेस गोइंग फॉर एन इंटर्नशिप would be the right way to go about things. कॉन्टेक्स्ट बनाएं लोगों से डिफरेंट डिफरेंट, जैसे इवेंचुअली यू कैन लाइक बेसिकली गेट समथिंग लाइक इन योर सेकंड सेमेस्टर और इन योर थर्ड सेमेस्टर। ज्यादातर आपको टाइम मिलेगा। देन अगेन थर्ड सेमेस्टर आपकी थीसिस होती है, आप कोर्स वर्क से ज्यादातर डन हो जाते हैं। सो इट्स बेटर टू डू दैट। मेरा प्लान यही है कि आई एम एक्सप्लोरिंग द सेम थिंग, लाइक learning a language at the same time I am trying to explore the job market. उसके अलावा I think I am collaborating on a research paper with my colleagues. Like that's a really good thing to go about things as well. अगर आप PhD करना चाह रहे हैं, for example, in the future, or if you want to like work in a research institution, for example, you need to have a research paper. Like काफी research papers के type होते हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे ये चीजें पता चली हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च जर्नल्स होते हैं। एल्सेवियर होता है, रिसर्च गेट होता है, लाइक अ लॉट ऑफ रिसर्च प्लेटफॉर्म्स, और उसमें भी कैटेगरीज होती हैं, Q3 Q2 रिसर्च पेपर, Q4 Q1। दैट रियली डिपेंड्स ऑन हु यू आर कोलैबोरेटिंग विद, बिकॉज बात ये होती है कि आप जब फर्स्ट टाइम रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, तो it's my advice that you collaborate with someone, because a lot of things that you don't know, you need to like understand them very slowly and gradually. So that's what I'm doing right now as well. So right now I'm like, ये बात करने में तो काफी कम चीजें लग रही हैं, पर बहुत ज्यादा है। रिसर्च करना इन itself is the वेरी सरदर्द का काम है बहुत। और then again applying for jobs, another thing that requires a lot of time.
then I'm learning like a language, right? You can do that. यहाँ पर लैंग्वेज सेंटर है और वो लाइक हर सेमेस्टर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफर कर रहे होते हैं. इफ यू हैव स्कॉलरशिप, इफ यू हैव द टाइम, स्कॉलरशिप्स के लिए बिकॉज आप फिर सारी बात है फाइनेंशियली भी आपको पैसे चाहिए होते हैं, हर चीज के लिए चाहते हो मैनेज करना होता है हर चीज. इफ यू आर ऑन अ स्कॉलरशिप आई गेस इट्स बेटर टू लर्न अ लैंग्वेज while you are at it because it will come in handy always. अगर आप थाई सीख रहे हैं तो चलो वो भी अच्छी बात है, पर कोई ना कोई आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए इंग्लिश के अलावा, सो दैट यू कैन एक्सप्लोर सम अदर मार्केट बिसाइड पाकिस्तान. क्योंकि अगर आप थाईलैंड में आए हैं तो यू वांट टू गो, लाइक आईआईटी इज अ गुड प्लेस टू गो समवेयर एल्स. फॉर एग्जांपल, फॉर लाइक मैं यहाँ पर इसके लिए आया हूँ. इवन a lot of people that I met, this is pretty good place when it comes to exploring other countries, when it comes to job market, when it comes to universities, future collaborations, a lot of things actually. So AIT has that, a lot of connections and everything. So you need to communication पे ही काम करना है, whether it's English, whether it's some other language. So I am doing that actually. That actually sounded a lot as well. And of course, I understand where you are. It's too much. But like I promise you one thing that यहाँ से आप किसी बेहतर जगह और अच्छी जगह ही जाएंगे. Like you are like sorted because not because you're just in IIT, but because you have clear ambitions and you got into it with clear ambitions. So I'm just so happy for it. One last thing, and we'll close our discussion. Um, we like my interest talking to you, and like I'm so glad we did that. Was like I look at you as a role model for our future generations. So, what advice would you give people, like not just in your field, but whatever they respectively want to do in their fields, and like जो लोग अभी metric में हैं, inter में हैं, and even like somebody did just like you're talking about your professor, उन्होंने they did a bachelor in something else and like they wanted to explore. अगर आपने एक कर भी ली है bachelor's and like now you want to switch and like I know we have talked a lot about it, but just one final note to finish this conversation. What my advice to everyone will be Yeah. that, yeah, so if you want to follow your passion, you can, but you need to be mentally prepared there, prepared about things that there are going to be a lot of hurdles. Because अगर आप अपने शौक को पूरे करने जाते हैं, it's always unique sometimes. Because हमारे हमें बचपन से यही बताया जाता है ज्यादातर हमारे यहाँ बेसिकली पाकिस्तान की जो सोसाइटी में, कि इंजीनियरिंग और मेडिकल आर द बेस्ट फील्ड्स, और इवन अब बिजनेस भी आ गया है चलो. But I guess there is a lot of other things to explore. You can do that, but you have to make up your mind. Things will come your way, and you have to tackle it. A lot of struggle and everything. And another thing is always listen to your parents, by the way, because my father, though हम हमेशा एक ऐसे ट्रांजिशन में से आ रहे होते हैं कि we think that our parents are wrong sometimes, but then again वो गलत नहीं होते. The way they are delivering their information or the way they are trying to convey things, it's little bit upsetting for us sometimes. But I think at the end of the day, what they are saying is वो उनके एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है. उन्होंने वो हर चीज जो हम करने जा रहे हैं वो सब चीजें वो देख कर आए हैं. So I Mhm. guess it's a better thing to do. उनकी एडवाइस लेते हुए आप अपने डिसीजंस लें. Yeah, even you want to explore something else, but you have to keep that thing in mind. They are saying the right thing. They are not wrong. Not just parents, people that have like that are in the practical life. You should keep their opinions in mind while doing everything else. Or bus. That's the thing, I guess. To tell. Always, basically, keep that in mind and move forward. और कॉन्फिडेंस और हार्ट ब्रेक्स हर टाइप के आपके
जर्नी में आएँगे, you need to tell yourself that you're gonna do it at the end of the day. अपने आप को बताना पड़ता है, अपने आप को कन्विंस करना पड़ता है, because if you lose that touch, you won't be able to do things. That's the reality actually. So I have seen everything. जो मैंने छोटा मेरा एक्सपीरियंस है, अभी अभी भी मेरे पास है, अभी काफ़ी चीज़ें जो मुझे अभी अकम्प्लिश करनी है, बट so far that's my advice for it. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Abid. It's been refreshing memories for me, at least. That's the first thing I could say. And it's always wonderful talking to people who are in AIT or have been into AIT. It's just a refresher for me personally, but then it's been a wonderful chat as well. Mhm. I think it's a very different conversation जो कि हमने अपने platform पे की हो, and I'm really looking forward to it. And this is on note that we are booking you for a next discussion on your thesis topic and wish you all the best for that. Of course, after you finish that. Thank you so much.